How are you? How are you? What's up? What's up? All good, all good. Busy work day, but love for football and love for Yeah, streaming. yeah, same. Yeah, and it's a big game. To be honest, अभी तक I was not taking the Club World Cup seriously. Quarter final से मैंने seriously लेना शुरू किया. And last Absolutely. night we saw a shocker. Not a shocker, but we nobody expected Chelsea to reach the final. What was your No. reaction? I mean, I think big up to Chelsea. I think, first of all, finally we could see Joao Pedro getting integrated to the squad, and finally we see what he could absolutely deliver in terms of like what goals, prop Bangers, bangers, proper finishing. bangers. Ah, Absolutely insane. And more and I think slowly Chelsea will be considered hmm, and sleeping giant type बोल सकते हैं because Maresca has finally settled the squad in ah, terms of how the defense is also playing, in terms of like haven't been very flashy to say hmm, the least, but they ah. have been very effective. वो तो बोलूंगा जरूर मैं. True. Right. Matlab, I didn't see the game. I saw the highlights, and the way Chelsea started, पता है मैं ना confused था. I Right. wanted one Brazilian team to reach the final, but me हाँ. being that वही 90s का बच्चा जो Right. मैनचेस्टर यूनाइटेड, जोसे मourinho की चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल पे बड़ा हुआ है, there's one part of me wanted United and Chelsea to do better कि यार वो वापस after Correct. Roman Abramovich left, I wanted to see the same guy do well. तो there was this thing कि यार चेल्सी भी चली जाए, but ठीक है. Right. I wanted one Brazilian team, but it's fine. It's fine. By the way, बाकी यार hello to everybody. Hello Kushagra. Hello Shubra. Hello Ayush. Hello Ratul. Hello Kukri Knights. Hello to everybody. And stream like कर दो and Ash के चैनल को सब्सक्राइब कर दो. Thank you टाइटल so मैंने much. टाइटल में मैंने दिया हुआ है इनका. चेक इट आउट. मैनचेस्टर यूनाइटेड का एंड रेगुलर फुटबॉल कंटेंट भी बनाते हैं. Thank ऑनेस्टली you so much. फ्लूमी अगर जीतती तो दैट वुड आल्सो हैव बीन अ शॉकर, नॉट अ सरप्राइज. Yeah. So obviously Fluminense with the Thiago Silva connection, हम्म. what a stalwart of a player बोल सकते हैं, like one of हम्म. the legends of the game, legends of Chelsea. I हम्म. think Thiago Silva को देख के, if there are Chelsea fans, I have been saying this in a lot of Chelsea streams as well, right? कि Chelsea always needed a leader at the back in terms of they have always thrived है ना. Let's go back to the days of Carvalho and John Terry हो गए. आपके हाँ. जब भी चेल्सी के सेंटर बैक पार्टनरशिप्स बेस्ट रहे हैं, they have thrived more. But हम्म. I think Maresca slowly has settled this squad down in terms of, I think, defense. Cucurella is doing fantastic. हम्म. Fantastic. That guy, redemption arc. I mean, I remember when he was signed from Brighton to Chelsea, initially he did not work well, right? या. But man, what a transformation post the Euros. Like, I think हम्म. pre-Euros as well, he did really well at Chelsea. हम्म. उसके बाद तो I think his growth trajectory has been absolutely fantastic. But it was actually after Euros, the song Kuku Reya, Seko Mena Paella, वो तो and then the मीम Haaland बन गया एक. part. He got a ad from Estrella. Yes, Estrella. correct. I saw that. Estrella से. Funny. But Absolutely. chalo, There we were know hoardings Chelsea around. reach. We Yeah. know Chelsea reaching the final. But tonight it's all about Real Madrid versus Paris Saint-Germain, the current European champions versus the team that has won the Champions League the most number of times. Yes. Big game. अभी तक कोई seriously नहीं ले रहा था. In terms of teams also, now they will take this super seriously. Everyone Now, is up for it. Mbappe has a point to prove. First talking point here is this random guy comes, Gonzalo Garcia, is having the best football of his career. Absolutely. And the way he's playing, last year they missed a number 9, somebody like Joselu. Now Gonzalo Garcia's come and he's doing the same job. Right. Now, what do you think? Will Gonzalo Garcia play in place of Mbappe or Vini? Will he take somebody's place? Obviously, in the tournament of 2 games, if they reach the final, but in the coming season, because Xavi has said he will stay. I want to work with him, etc., Right. etc. And there's a redemption arc for Mbappe also that he has to score against his ex team. क्या लग रहा Right. I think obviously slowly Mbappe is getting reintegrated to the squad kind of in a pre-season way. है? I think this was a great opportunity for Xabi Alonso to try out Gonzalo Garcia, right? And हम्म. what a fantastic start to Gonzalo Garcia's top tier career, right? Four हम्म. goals already in this competition and four very good finishes, right? Good.
हाँ हाँ Poachers मैं finish. मैं 1 मिनट आ रहा हूँ Hmm. ना Okay, माय okay. वाइफ इज कॉलिंग हाँ हाँ मैं आ Okay, रहा हूँ okay, okay, कमेंट्स okay, लो okay. हाँ हाँ Okay, 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 okay. Kanav always the funny one. Kanav कह रहा है hope both team lose. भैया I am back. Hello Godzilla के पापा. Hello. Gonzalo Garcia loan to Summit. नहीं यार I don't think so loan होने वाला है. Still can't take Kukure seriously. I क्या समझता हूँ यार मैं उसको लेना मुझसे. Hi handsome guy, Lakshya dude, how are you? We played well and fine. By the way, Odia supported in which team? By the way, okay. Hmm. यस बैक चाबी दे रहा था वाइफ को शी इज Hmm. कमिंग आल्सो Hmm. यस yeah so I mean, to me, this looks like Gonzalo Garcia's ability is displayed right now. Mbappe Hmm. will be the primary striker, but we have seen before as well in when Xabi Alonso played with Bayer Leverkusen, right? He has Hmm. always worked with that two striker role, like how he Hmm. used Patrick Schick Hmm. along with I think when there was Diaby, there were more players during that season, right? When Hmm. a lot of Hmm. strikers, he had a combination of two or three strikers like Adley. Hmm. So I think we'll see a lot of rotation in the whole season. Mbappe Hmm. is the prime player. I mean, there's no questions to it. I think he's slowly integrated, but Gonzalo Garcia is a fantastic asset to have right now for Real Madrid True. going for the season. I Insane. think he is that missing puzzle up front में जो उनको चाहिए था, that Koscielny type player. Right. But somebody has to sit out, and most likely it is Rodrigo. What do you think is happening with Rodrigo right now? With Rodrigo, I think it's clear that I think last 6 months a player unsettled tha, right, at Real Madrid. There was so much news coming in that he might have to leave. Uh, I think he needs to be the main man right now. I think he has reached that point as to like fantastic ceiling in terms of like the ability, versatility, left wing, center forward, right wing. You can put him anywhere. Hmm. Clutch player jo bolte hain, he has that clutch Madrid mentality as well. Hmm. Arsenal are heavily linked with Rodrigo right now. Now the thing is that Arsenal is gonna sign Madueke. Is that gonna affect whether Arsenal is gonna sign Rodrigo or not? I don't know. Hmm. Arsenal do have the funds. Rodrigo, in my opinion, can still be in the plans of Xabi Alonso if he sees that he has a role and opportunity. But Hmm. knowing Xabi Alonso, I think he's going to integrate more Endrick and Gonzalo Garcia in that squad in terms of the forward Hmm. positions. With True. Brahim True. bhi hai, अभी तो न्यूज right? ये भी आ गई है कि कारेरास इज आल्सो ऑलमोस्ट डन, बट फ्रान गार्सिया इतना बढ़िया खेल रहा था, बट Right. सडनली कारेरास इज आल्सो देयर. Fantastic. We'll talk about them. Yes. Yeah. Yeah. Pure game pe. Yeah. 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 यस. नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट एम्बापे? पॉइंट टू प्रूव फॉर हिम. Absolute लाइक. point to prove. Not even like from a personal standpoint. Uh, I think the jo ek rumor, I won't say rumors, but it's like Gonzalo Garcia is the new center forward for Real Madrid. Wala jo narrative slowly बनने वाला है, it's going to be broken. Hmm. Mbappe is quality. I mean, saw the last goal against Dortmund. Hmm. What he could exactly Yeah. provide. Slowly, I think I think he's coming back into the season. Big point to prove personally. Also, I think people remember that whole video that got viral, that conversation with Enrique and Mbappe around the mentality Where factor. he's like, if you are a champion. If you're a Yeah. champion mentality, I think what Hmm. Mbappe will definitely try to show here is a lot of grit and lot Hmm. of track back, lot of pressing. Hmm. I think it'll be interesting to see, man, on that game. Hmm. But now if Gonzalo Garcia is there, Rodrigo खेल रहा है. Ah, You have Mbappe, Vinicius are permanent. right, Sir Bobby Charlton, Mr. Enric. What's going to happen? You know, there's a funny thing. अब हुआ क्या? Carlo Ancelotti became the manager of right, Brazil. right, So he did not select him for the Brazilian national team, right. saying he did not play for his club. And in his Oh club, my it was god. Carlo Ancelotti who was his manager. Oh my goodness. I mean that's exactly like the aura brain fade moment sometimes Carlo Ancelotti can give. I mean, this is funny. I think he has been charged with recently I saw news. Is Hmm. he charged with a tax fraud something related to image rights? I think I'm 1 year I'm ka not sure. sentence. I'm not हाँ sure. Brazil में. yeah. हाँ हाँ I think
आई थिंक कुछ टैक्स फ्रॉड का इशू है, बट आई थिंक 1 year का सेंटेंसिंग कुछ तो आया है, बट आई थिंक ही विल बी फाइंड, जस्ट लेट गो विद द फाइन, बट या वो न्यूज़ आया है विद एंचेलोटी। रातुल कह रहा है, ऐश भाई एम्बापे को यूनाइटेड में ले लो। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर यूनाइटेड वर कंसिस्टेंटली टॉप 4 में आती, राइट, कंसिस्टेंटली इन द टाइटल रेस में आती इन द लास्ट 4-5 years ना, हम्म एम्बापे टू यूनाइटेड वुड हैव मेड सेंस फ्रॉम अ कमर्शियल स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम हम्म अ प्रोजेक्ट स्टैंड पॉइंट। अभी फिलहाल प्रोजेक्ट नहीं है यूनाइटेड के पास। एम्बापे टू यूनाइटेड इज अ फार फेच्ड रियलिटी that I don't हम्म want to talk about or think about at हम्म this point, right? Yeah, हम्म but I think one of the major uh, transformations, I think a lot of people will chat on the chat will agree and let me know what you think as well, is the Arda Guler transformation under Real Madrid, right? Like the Arda Guler primary kya tha? As a cam, like a makeshift right wing kind of thing. Now in this formation in with Xabi Alonso, he's playing 3-4-2-1 mein in that left LCM. Absolutely killing it. Already two या assists in the last game. या रियल मैड्रिड के पूरे गेम पे वी सॉ लॉट ऑफ वर्टिकल पासिंग, मतलब बॉल लेते ही पास छूट रही है फॉरवर्ड हम्म लाइंस पे, राइट? एंड आई थिंक दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी जिसने जैसे ज़ाबी अलोंसो एट बायर लेवरकुसेन अनलॉक्ड ग्रैनिट जाका in that way, हाँ like हाँ from a defensively minded midfielder to a more progressive minded in terms of या at least dictating the tempo. Arda Güler transformation needs to be talked about. I think he is going to be a crucial player for Real Madrid this season. 20 years old, right in its perfect age to grow. हाँ What do you see in Arda Güler this season from a यार, rival पता standpoint? है, टिल लास्ट ईयर मेरे को आर्डर गुलर लगता था द कक्का, फुल पोटेंशियल, हाँ हाँ कैन रीच, बट उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एंड ही वाज गेटिंग दैट ट्रीटमेंट। कार्लो के अंडर यही था कि पूरी पोटेंशियल है, बढ़िया है, अगर ये बार्सिलोना में होता तो 10 फोल्ड्स बेटर होता अभी। right. बट now Jabi Alonso is here, and Jabi Alonso being somebody who played in the double pivot himself, वो खुद एक midfielder था। Now it's the time for midfielders to shine, and your front men would only be there to be fed, not to Yep, single-handedly carry the game. Last year absolutely. क्या हो रहा था? Give the ball to Vini, give the ball to Mbappe, हाँ, and जय माता दी। जय माता दी वाइब्स, पूरा वाइब्स पे चल हम्म रहा था लास्ट सीजन। देयर वाज, हम्म आई थिंक उसके पिछले सीजन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर व्हेन दे वन, हम्म बट द लास्ट सीजन एक्चुअली लाइक ऑब्वियसली इंजरीज वर पार्ट ऑफ इट, बट डेफिनेटली कोई स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा था। रियल मैड्रिड वर एराटिक, बहुत बॉल्स लूज कर रहे You थे know, दिस I टाइम। remember हाँ, one game. I remember हम्म, one specific game against Dortmund. They were ओ losing या, 2 they were losing 2-0. And then something happened to Vinny in the second half. Nuri Sahin ने थोड़े गलत changes किए. They राइट, went defensive. And then यस, suddenly the team lost 5-2. Vinny scored a hat trick. And that was the peak of pass it to Vinny, pass it to Mbappe और सब यप, चंगा हो जाएगा। यप, And it's from that game उनको वो, मतलब it kept on going, फिर वो बड़े गेम्स में इट डिड नॉट वर्क आउट, आर्सेनल वाली गेम एब्सोल्युटली, में इन द एल क्लासिको। तो ये इस बार एटलीस्ट अंडर जाबी अलोंसो नहीं लग रहा। दिस टाइम इट इज मोर ऑफ हैविंग कंट्रोल इन द मिडफील्ड व्हिच दे वर यस, मिसिंग, which is good. And another thing that I really like about Jabi Alonso is flexibility. बहुत ज्यादा, बहुत, फॉर्मेशन चेंज करनी है, ये कर दी मैंने, अच्छा अभी थोड़ी मेरे को पोजीशनिंग चेंज कर दी, फ्लूइडिटी हाँ। है गेम में, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हम देख चुके हैं, राइट लक्ष्य, ऑलरेडी इन हम्म द लास्ट टू गेम्स, राइट, इन द गेम अगेंस्ट यूवेंटस, राइट, और ऑन द प्रीवियस गेम दे वन 2-0, राइट, लाइक सम विनी एक मैच में कंप्लीटली सेंट्रल खेल रहा है, हम्म एंड द नेक्स्ट गेम और इवन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स इन द सेकंड हाफ ही इज कंप्लीटली स्विच्ड वाइड एज वेल। हम्म अभी जो फुटबॉल देखने मिल रही है कि जैसे ही रियल मैड्रिड को बॉल मिल रही है, लाइन ब्रेकिंग पास ज्यादा आ रहे हैं फ्रॉम द हम्म मिडफील्ड, राइट, एंड उस हिसाब से, एंड एक बहुत बढ़िया, मैं आई वाज एनालाइजिंग देयर कि हाउ रियल मैड्रिड इज प्लेइंग इज एग्जैक्टली अनलीशिंग फ्रान गार्सिया इनटू अ Alejandro Grimaldo role. हाँ 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 Grimaldo used to really dart inside the box. उसके बॉक्स में टचेस बहुत ज्यादा, सेम विद फ्रिम्पोंग एज वेल, फ्रिम्पोंग के भी काफी टचेस इन द बॉक्स है, इसलिए दोनों के पार्टनरशिप के हिसाब से बहुत गोल्स हैं, विच इज हम्म अ सिमिलर वे ऑफ हाउ मेंडेज एंड हकीमी आल्सो प्ले एट हम्म पीएसजी। तो अभी फ्रान गार्सिया को जो अनलीश हो रहा है इस टाइम पे अंडर हम्म ज़ाबी अलोंसो, दैट इज आल्सो, दीज आर आर्डा गुलर एंड फ्रान गार्सिया's transformation which we are seeing in this club world cup
is something to really look forward to हाँ, this season. same. But वो है कि Fran Garcia, if Carreras come, Fran Garcia would be on the bench. तो Right. but Carreras is Absolutely. also an amazing player. अच्छा, what about Konate? यहाँ पे लोग कह रहे हैं Konate coming to Real Madrid. Do you think he's coming to Real? Okay. Or he is running down his contract? Yes. I think Liverpool might not make that same mistake they did with Trent, right? That to run down the contract of Konate. I think that whole Trent episode became so toxic, related to whether he should have actually given a lot of revenue, which he eventually did to Real Madrid. I think Real Madrid paid 10 million or 12 million to get him for the Club World Cup early, right? हाँ. Um, I think Konate fits the Real Madrid mold a lot because going forward in the whole season, Chouamani can't be the one who'll be playing central center back, right? In that three, Hmm. it's a makeshift role right now that is given to Chouameni. I think yes, we have seen that Arda Guler transformation, but the three midfield will be Bellingham, Valverde, and Chouameni or हाँ. Camavinga switching in as well. So center back pay with Hoysen on either side and maybe Rudiger there uh, to be there as a safety net. I think Konate makes complete sense. अगर कोनाटे वाला डील हो जाता है between Liverpool and Real Madrid, right? Liverpool has a free run then or Mark Gehi, the England हाँ. centre back, हाँ. right? And that guy is inching to play for the World Cup and secure his place even more. और उसको ज़्यादा start चाहिए to play for a top team. So Hmm. ये interesting रहेगा. Konate is a fantastic player. Very not as mobile as इसका Rudiger बोलूंगा, but a very intelligent centre back, very strong. उसका Hmm. Van Dijk का partnership was top tier in the Premier League. Hmm. Yeah. But now, out of everybody, Real Madrid is known for their doggy dog defenders, somebody like Rudiger, Militao, Pepe, Yep. Ramos. But now they have Dean Hudson. And what a Yeah. pleasant surprise. What Yes. good to the eye. उसको देख के लगता है कि उस पर pressure ही नहीं आता. He's like, give me the Right. ball, I'll pass the ball, no pressure. I love him. I wish Yep. Barcelona में आता वो, but we had Pau Cubarsí. Right. But looking at him for the Spanish team, मैंने कहा Spain की defense is sorted. Cuba, then you have Inigo तो retire हो गया, sorry. Dean Hudson, Raul Asensio, Lenomo. Spanish defense is sorted. Lenomo, I like Lenomo a lot. Like in Hmm. terms of like very busy and stable defender भी लगता है. Like not like when you see his build and stuff, you won't see he's like more of a Ruben Diaz kind of mold. Oh, Lenormand ka, right? But Dean Huijsen, man. I mean, Dean Huijsen, when we saw him play for Bournemouth along with Zabarni, by the way, Zabarni and Huijsen were two fantastic centre backs at Bournemouth. Bournemouth, Zabarni is linked to PSG, हाँ. right, for 50 million deal or something. Okay. So they complemented very well. Dean Huijsen tempo build करता था back से, which you are already seeing for Spain and for Real Madrid. Hmm. I think it's a prime signing. I think Real Madrid realized that after they missed Euro, they needed someone to step up, right? So, I mean, it's a fantastic signing. But his red carded is not going to be available for the semifinals against Hmm. PSG. So Yeah. He's not there. He's not there. Even for PSG, a lot of players are missing. दो तो अपना एक पाचो नहीं है, लूकस हर्नांडिस नहीं है, I think Ruiz नहीं है, Hakimi is back. yeah, तो it's fine, like they can still manage. But my question is, do you think कि एक तो प्रॉब्लम होती है ना बारसा रियाल की, अगर आप मैनेजर हो ना, एक तो यहाँ पे right. कमेंट्स पीपल आर कमेंटिंग कि हाँ. यार आई विश मैच ड्रॉ हो जाए, दोनों टीम हार जाए. बारसा फैंस do not want to see either of the team win. बाय द वे यार 26 लोग आ गए हैं, स्ट्रीम लाइक कर दो और ऐश के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार. Thank you so much. It's relatively very low because if I'm doing a Barca stream 100-150. हाँ तो बारसा वाला भी करेंगे going forward. It's a long season, right? And but I yeah, think people will come. But anyway, my question is, do you think क्योंकि इतना scrutiny होती है अगर आप बारसा रियाल के मैनेजर हो, if he wins, if Xabi Alonso wins, he is the guy. Right. He is the guy. They win the Club World Cup Right. and they go on a high starting the season. But if they lose, do you Right. think there'll be a lot of questions कि यार new manager needs to fix this or that? Real Madrid का जो coaching job है, it's not that easy. Right. Or will there be a certain amount of criticism but not shooting off the roof? I think the third will be the factor because I think let's be I think unanimously
people have started to see कि Real Madrid कैसे खेलने वाली है under Xabi Alonso in some kind of way, not the full unleashed manner, but Hmm. some kind of way. हमको दिख गया है कि क्या होने वाला है, what kind of football Xabi Alonso is going to play. Even if they don't win the Club World Cup, right? Hmm. I think there are so many positives to take for Real Madrid this season. To get Hoyson play as well, to see Arda Guler's performance, to see Fran Garcia's darting in the box, to also see Trent scoring 2 assists already in the Club World Cup. हाँ Like, हाँ. right? So, but इस match में देखने मिलेगा कि how he lines up with. I think we'll talk tactics later, but Hmm. from a Real Madrid standpoint, if they don't win the Club World Cup, it won't matter to them. Honestly, I mean, I still say it's an interesting tournament to watch right now in the later stages, but it's a Hmm. glorified preseason, right? We saw what happened with Musiala, which that should not have happened. He Yeah. should have been He made a holidaying. video. He made a video now कि किसी की Uh, गलती नहीं है. right. Things happen in football, which was Exactly, nice. exactly. But I think from a Xabi Alonso's perspective, this is the perfect audition kind of thing to Real Madrid fans. Ki this is what you're gonna get. Might even get better with preseason, and a good high to reach even the semifinals and play at least 5 games before preseason is a Hmm. very good start in my opinion for Xabi Alonso. Hmm. भाई Right. Barca fans are full in the mood है, like Visca Chelsea, Visca London. Yes, fair enough, absolutely. मैं तो नहीं चाहूंगा, देखो, as a I consider Chelsea as a prime rival from Man United, right? From my days Hmm. of watching football since हाँ. 2004, right? But 156, I still remember me going to school, एक Chelsea fan, एक United fan, and me sitting, मतलब low key Arsenal support करता था मैं, कोई team support नहीं Right. करता था, but ठीक है, for Wenger, for Henry, I would still watch Yeah, Arsenal. absolutely. So it was a seeing that Chelsea side used to scare me, Lampard, Terry, and other Yep. people. And Makelele. अच्छा Makelele, yes, Peter Cech. अच्छा यहाँ पे आयुष से साथ लक्ष्य भाई एक बात बताओ, चेल्सी पे एफएफपी इशू नहीं है क्या? इन्होंने भी हुआ है भाई, उन पे आई थिंक 60 मिलियन का फाइन फाइन लगा है. पड़ा है उनको, यूएफए ने लगाया उनको फाइन. दे डिड नॉट कंप्लाई टू द रेगुलेशंस ऑफ एफएफपी. उन पे लगाया है, एस्टन विला पे लगाया है, न्यूकासल पे लगाया है, इवन बार्सिलोना पे भी कुछ कुछ हद तक लगाया है, कुछ फाइन्स, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लगा वो लगा है उनको. एंड द थिंग इज, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट चेल्सी आर फ्लशिंग वन आउट लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट्स. हाँ, चेल्सी आर फ्लशिंग आउट लॉन्गर एंड लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 7 years. ठीक है, और उनकी पेमेंट्स अपफ्रंट नहीं होती है. दे पेमेंट्स आर यूजुअली लाइक इन इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टफ, राइट? They've signed how much? 50 players in the last 2 seasons. I think they have converted into more of a selling model at this point. Like they gather the likes of, like, Mark Guiu was one of the players they got from La Liga, right? Very young, very exciting player. Like, but again, they're sending them loan to Strasbourg. Okay, yeah, they're sending people to get loaned in other clubs as well, and then raise their stocks. Once they raise their stocks, they are trying to sell those players. And जो मेन टीम पे इंटीग्रेट कर गया, they are getting them integrated into the main squad. I think that's what's happening with Chelsea. But yeah, I mean, it is what it is. How they're making these deals happen, only they know. They also, I think, sold some of their hotels as well. Chelsea, the जो ownership उनके model. उसमें है, द इनसाइड स्टैमफोर्ड ब्रिज. Right. Exactly. They, and I think कुछ न्यूज ऐसी भी आ रही थी, the women's team भी sell करने की न्यूज आ रही थी, right? Same with वुमेन्स Aston टीम. Villa. Well, yes, वाओ. ownership. So this is how things are being done to maintain your primary squad. I think the Todd Bowley's model is completely different than Roman यार Abramovich. आई मिस अब्रामोविच. क्या Cutthroat, ओनर था, क्या ओनर था यार. मतलब somebody who would put his own money to run the right? club. That Absolutely. completely opposite of Manchester United. I can talk like years and years about how United पता messed है, it but up. Ash, you Yeah, have no idea how desperately मैं कितना desperate हूँ. I want the old Man U, the old Chelsea to come back and compete. I don't want to see Manchester City anymore. हो गया right. भाई. Okay, and from a, not from a nostalgic standpoint, I think it's more winners need to pop up in the Premier League soon, because City has won kitni char already jeeti, and then suddenly we all already have another winner. But City's already looking good for this season, even if they Hmm. lost the Club World Cup though. Hmm. Let's remind everyone that Pep is revolutionizing the midfield. Reinders and Cherki are going to be some really really impactful signings. I want that, more than Lakshay, more than us wanting to win trophies. Now we lost that fear factor at Old Trafford for the last 2 seasons. I want हाँ. that fear factor back. Ki 2-0 pe hai na, we're gonna come back no matter what.
हाँ. score goals. We have scored hardly 42 goals and 52 goals in the last two Premier League seasons. These are very rookie numbers, like very relegation level numbers, right? Hmm. So yeah, absolutely. हाँ. यार बाय द वे जितने भी लोग पूछ रहे हो ना कि ये वाला प्लेयर बारसा के लिए, मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दी है, हु विल बी द नेक्स्ट लेफ्ट विंगर, कल के लिए शेड्यूल्ड है, सुबह आ जाएगी, सो देख लेना. Great. अभी क्लब वर्ल्ड कप के बारे में हम बात कर रहे हैं. इवन वो यू टॉकिंग अबाउट दैट यूनाइटेड का होम वाला ना, मी एज ए किड वाचिंग वन, द गेम इज 1-1, आई थिंक इट्स ओवर, सब हो चुका है बढ़िया, एंड देन सडनली वन क्रॉस बाय रायन गिग्स, रोनाल्डो और रूनी ऑन द एंड ऑफ इट, Absolutely. 2-1, Fergie time, see you later. Thanks for Absolutely. A watching. partnership. Thanks Thanks for for watching. watching. And no, it used to be more partnerships, not only from those big players, I think. जो यूनाइटेड के बेंच भी हुआ करती थी, राइट, इन टर्म्स ऑफ डैरेन फ्लेचर हो गए, जॉन ओशे हो गया, आपके Carrick, वेस्ट ब्राउन हो Michael गए, Carrick. कैरिक. कैरिक इज like the most underrated midfielder in like top 2 top 5 में तो आता है. I think the way he dictated tempo as well, that was fantastic. These players used to turn up when हाँ, needed, not only the playing 11. So mentality वाले matter करते हैं. Ole Gunnar Solskjaer, when he used to हाँ. play for under Sir Alex Ferguson, used to score the maximum goals from bench, and he used to never complain, right? हाँ, हाँ, हाँ. Because the roles were pretty clear, right? But yeah, हम्म, I mean, आज बारसा और इस पे आज मड्रिड और पीएसजी, यूनाइटेड, we can do an absolute nostalgia stream or season to look forward हम्म. to stream as well, definitely. But yeah, टुडे प्रिडिक्शन देते हैं, बट अभी धीरे धीरे करके जाएंगे. आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द वेदर, गर्मी में खेलेंगे, विल दैट बी अ फैक्टर इन टुडेज गेम? um, it's always a factor. I mean, I stay in Canada, right? And this time, Canada US पे गर्मी has been very up and down, right? Like कभी काफी ठंड पड़ी है कुछ दिन, and the days are absolutely humid like crazy. 35 तक जा रही है, 32, 33. It's not the best conditions to play football in. It is humid. I remember Juan Pedro के हाथ लाल हो गए थे when he was even scoring the goals. I saw that. हाँ. Like hands were completely red. And there's a reason, because and players like were turning red. Um, I think we'll see a lot of substitutions and rotations in this game. I don't see everyone playing the full 90. Most of the star players, they have हाँ. to. अगर लाइनअप नहीं आई है तो I don't know, but is Trent and all missing? मैं comments देख रहा हूँ live guys के. I हाँ, think ट्रेंट इज मिसिंग. तो ट्रेंट अगर मिस कर रहा है तो आई थिंक we will see get to see Valverde playing that position, I think, most probably, and we might see Camavinga getting in uh, into that pivot as well. So interesting रहेगा match. You know, last season तक when I used to see Chouameni had been made into a joke, but this season suddenly resurrection लग रहा है Right. under Xabi Alonso, because Chouameni was playing centre back, DM, Yep. कहीं भी खेल रहा था, and he has no place. Centre back में तो he was making horrible decisions, but suddenly Absolutely. has become the most important player in the midfield right now, because the general of the midfield अभी. Right. And Chouameni, I think this is where I think since they Madrid lacks that center back वाला role, I think playing from the back, जब आप build up करते हो back से, right? Chouameni हाँ. has that experience to play deep. तभी वो खेल रहा है वहाँ पे. But long हाँ. term में वो नहीं खेलने वाला वो position. हाँ. Konate to Real Madrid looks like a sense to me deal. Like it makes sense. वो होगा तो it'll be fantastic. Chouameni, yes, you're right. I think last season he made a lot of mistakes. Previous season he was stellar. हाँ. Absolute stellar. Like last season, I think. Because उससे पहले he came after the World Cup ना, just after World Cup, Right. and World Cup में उसकी पूरी hype बनी थी Chouameni की, Right. and then fizzled out in the last season, because last season Real Madrid का तो सभी खराब खेले except Mbappe. Right. And even like the likes of Vini, even Bellingham, they underperformed from their usual levels as well, right? Most important, I think, factor रहेगा कि how Xabi Alonso is going to use Trent this season, right? And since this match we don't have Trent in this game, is what I'm hearing right now, is I think they're going to miss those deliveries, at least from the corner and from the set pieces. Like 2 assists already हैं Trent के. And but I see this as a blessing in disguise for Real Madrid for this PSG game. I'll tell you why. Nuno Mendes battle against Trent in that Champions League round of 16 against Liverpool. Nuno Mendes absolutely like ate him alive. Absolutely ate him for breakfast, lunch, dinner, cocktails, सब कुछ हो गया उसके साथ, right? And
I think if Valverde plays that role, which he has played before as a right back or a wing back as well, I mean, Fede Valverde is the most complete player in world football हाँ. ever, right? So that will be, I think, Valverde is kind of the right guy to stop Nuno Mendes from advancing a lot. I Hmm. think वो tenacity दे सकता है than what Trent can do. Trent has been exposed before with the explosive wing backs and wingers. Hmm. तो ये डेफिनेटली मैं तो बोलता हूँ ब्लेसिंग इन डिसगाइज जैसा ही है at this point. Lakshay will be slowly back, but I can definitely take some comments also side में. Um, yeah, Yeah. Lakshay is back as well. Fantastic. चलो. हाँ तो वही है. I think. What do you think? Is this a blessing in disguise that Trent is not playing this game I or feel whatever? yes. I feel yes. भाई Nuno Mendes, I still remember अभी in the Nations League final लमीन यमाल को उसने इतना परेशान कर दिया, Right. so Trent would be an easy target for him. So it's a good thing only. I think Vasquez is playing in that. Probably Vasquez might play, right? Vasquez might play, but we have seen Valverde doing that. So I think Vasquez. I think this. I think last games he रहेगा. I think if Real Madrid loses, we might see Modric and Vasquez going away. Hmm. Um, but that's what tactical switch के मामले में I would put Valverde at that right wing that position Hmm. to have a battle against Nuno Mendes. Vasquez is good, but Nuno Mendes, the form he is in, he might just again हाँ, eat Vasquez alive. form of his life. Right, True, true, right, true. right, right, But I love PSG का midfield. Vitinha, Ruiz, and João Neves. João Neves has been the find of the season in the midfield. right. कहाँ from Benfica, then suddenly to PSG, and PSG knockouts. Sorry, Champions League के new format के knockout round से आते हुए Peak they करिए. won it. हाँ, they were not even qualifying, and now here we are. Right. And I think they peaked. Na City के game से they peaked massively. They peaked when they beat City. oh Um, yeah, so that's where they absolutely peaked. और वो हार रहे PSG. थे. They were Right, right. They were losing. they were nowhere. They had a very wrong. They had a very poor start. Arsenal से भी हारे थे उन लोग 2-0 at home. Arsenal completely dominated that game. But Juan Neves, I think very very interesting that 90 million की signing थी. I know he was linked with Man United a lot. Man United fans were completely like, no, Juan Neves. We saw him in one game against Georgia in the Euro. He was not that great. He's overrated. Again, हाँ, Benfica signing, he might not work. हाँ. But you need the right manager to have players evolve. Hmm. Luis Enrique transformed Juan Neves, True, true. है ना? And Juan बिल्कुल. Neves काफी central खेलता था पहले at Benfica. Now look at Juan Neves, absolutely everywhere on the pitch, right? Yeah. In terms of movement. तो right manager भी तो चाहिए होता है आपको unleash करने के लिए players. Juan Neves Hmm. is absolutely took it to next level along with Vitinha. True. Vitinha, I mean, okay, question for you, Lakshay, right? हाँ, हाँ. So Sure. let's say De Jong leaves in the coming years, right? Do you see Vitinha the right replacement to for him, or will Vitinha with the way he plays will? I mean, he right now when I see Vitinha, he's the Barcelona mold kind of player which we are looking. So, do you see him as a long term replacement, or he's going to be PSG through and through? My answer is no, because he is very similar to Pedri, and we have Ah, Pedri. you already have Pedri, We have Pedri, and then we have two young Casado. marks, the mark square which I called Casado and Bernal. तो Yes, जैसे ही अगर बारसा की मिडफील्ड में चेंज होंगे तो एक सबसे बड़ा चेंज होगा, डियोंग नहीं है तो बर्नाल या कस्टाडो में से एक बंदा right, विल टेक दैट पोजीशन, एंड वो होंगे आपके द बुशी रोल. right, And the bushy role is controller, somebody who's slow, who does not have pace, right. but will be the anchor in the midfield, will control the tempo, Ah, will decide should I go long, should I go short, should I right, go left, should I go right, right. and will be that one man just before your defense, as the last line of defense just before the defense. Right, right, right. तो Absolutely fair. तो दैट वुड बी बर्नाल या कसाडो में से. सो दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा विटीनिया नो. अगर पेड्री की रिप्लेसमेंट चाहिए, Right. गेट विटीनिया. Yeah, right, right, right. But I think we all agree Pedri is nowhere leaving Barcelona in the near future. मेरे हिसाब नॉट से हैपनिंग. यस, that's नॉट not हैपनिंग. happening. That's not हाँ. happening for sure. Very I similar think players. It's very हाँ हाँ. similar. It's like having Vini and Mbappe both on the team. I know it exactly. Also एक important battle हम देखने वाले हैं लक्ष्य in this game is around is with
Hakimi and Fran Garcia, हाँ हाँ right? हाँ What has been your assessment of Fran Garcia at this point? Like we saw him last season, very busy player. Asensio or Fran Garcia, we saw both of them coming in, right? हाँ. Will Fran Garcia be able to deal with Hakimi? I mean, I know Hakimi has been fantastic even in हाँ. this World Cup as well, but what, I think यहाँ battle decide हो सकती है. पता है क्या है, जिस टीम के पास ज्यादा बॉल होगी ना, वो अपनी लेफ्ट विंग पे ज्यादा डोमिनेट करेगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर बैड व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग. आई वुड से Absolutely, yes. फ्रान गार्सिया स्टिल बेटर. हकीमी से आई डू नॉट एक्सपेक्ट डिफेंडिंग. Right. He's gonna just dart into the box with the runs. I think he's हाँ gonna be there supporting. I think once Hakimi darts ना तो उसके साथ वो हुआ नेवेस आता है सपोर्ट पे हाँ. in that channels कभी कभी to support यस. the हाँ. तो तो गोइंग yeah, फॉरवर्ड बोथ ऑफ देम विल किल, एक दूसरे को खत्म कर देंगे. right. बट Who is what's डिफेंसिव, the team news though? I mean, यार is अभी नहीं पता, Hakimi बिकॉज आई सेड इन माय रील व्हिच वेंट फकिंग वायरल, गॉट 100K or something on right? Instagram. I said Ruiz and Hakimi are not there. People are saying वो आ गए हैं. Some are saying Hakimi आ गया है. Some saying Ruiz आ गया, Hakimi नहीं है. Right. All sorts of news. All All sorts of sorts of news. लाइनअप देख के ही पता चलेगा. अभी इंजरीज की भी न्यूज नहीं है, राइट? इज दिस सस्पेंशन दो? आई एम नॉट श्योर. नो नो सस्पेंशन नहीं है, इंजर्ड है. जो मैंने वीडियो के टाइम बनाई रिपोर्ट चेक करी थी, इट राइट. वाज रुइस और हकीमी दोनों नहीं है. आई थिंक फिर दे आर बैक. दे आर बैक. अब उसमें से शायद से एक होगा, एक नहीं होगा. I एंड think Ruiz might drop down. I think we might see Zaire Emery playing this game, हाँ or even Lee Kang. वो हाँ खेल सकता है. I think. I हाँ. think we might see. Hakimi might हकीमी start. है. It's a big game. I हाँ think he will be हकीमी there. खेलेगा, हकीमी खेलेगा. बाय द वे 44 लोग आ गए. स्ट्रीम लाइक कर दो और ऐश के चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ऐश, डिड यू गेट एनी सब्सक्राइबर्स? अभी चेक. let अगर me नहीं, check. Let me check. चेक चेक Let me यार, check. हाँ सब्सक्राइब हाँ करो ऐश के चैनल को यार. हाँ. अभी आज आज थ्री सब्सक्राइबर्स आए हैं मेरे. थैंक यू. अभी स्लोली थ्री वी आर रीचिंग. हाँ 44, कम से कम 15 सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करो यार. थैंक यू सो मच. टाइटल में मैंने टैग किया हुआ है यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू लक्ष्य. आई मीन ऑल्सो मेरे चैनल पे लक्ष्य आए थे लास्ट वीक. लास्ट संडे को आए थे. फैंटास्टिक स्ट्रीम. वो स्ट्रीम ऑलरेडी 1K व्यूज के ऊपर जा चुकी है. हाँ इट पीपल वेंट. आर लविंग दैट स्ट्रीम. उसको कमेंट्स भी आ रहे हैं उस पे स्ट्रीम के बाद में, दैट हाउ मैं वी दे लव द स्ट्रक्चर ऑफ द होल स्ट्रीम. हाँ. तो फैंटास्टिक. वाह. अभी अरे व्हाट अ सेशन. बिकॉज मैंने लास्ट चेक किया था, इट वाज 60 लाइक्स एंड 500 व्यूज लास्ट दैट आई चेक. अभी वो 1000 हो गया. वॉच आवर्स भी काफी हैं उसके. So people have नाइस. actually watched it long. हाँ So I think we आफ्टर. had a fantastic session उस दिन. We talked हाँ about different players on Barcelona. क्या होने वाला, what to look forward to the season, what exactly happened with that financial aspect as well. So हाँ हाँ. चलो absolutely 51 लोग आ गए हैं. पीपल आर कमिंग. बढ़िया. बढ़िया बढ़िया. स्ट्रीम लाइक कर दो. हुडसन इज अ बिग मिस यार. हुडसन के बारे में हमने बात कर लिया. हुडसन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नहीं है. टीम्स के बारे में अभी हमने बात करी है, दैट हकीमी माइट बी देयर बट फाबियन रूइस नहीं होगा. बट उनकी मिडफील्ड में जायर एमरी इज अ गुड. जायर एमरी वाज दी गाय बट समहाउ डेजिरे डुए एंड अदर्स क्रिप्ट इन, और उन्होंने लाइमलाइट ले ली. बट वंस अपॉन Exactly. अ टाइम आई रिमेंबर Very जायर. underrated. Zaire Emery is very underrated. I mean, initially people did not think that he will cross the line, but Enrique के under, I think whenever he has come in, he's looked good in parts. So ये game में तो I think if Zaire Emery might start, definitely. हाँ यार, ये we discussed it. Carlo Ancelotti 1 year jail, tax fraud. A lot of people are asking me. Image अभी rights तक का. हाँ अभी I'm not sure I'm going to read more about it. But अभी तो Yeah. यही आ रही है. अच्छा, what do you see about Kamavinga? Kamavinga is an interesting choice here. कहाँ पे खेलेगा अगर खेलेगा भी, if he wants to start? Right. Kamavinga, I think. I think वही LCM वाला role. Valverde at the right. I think Bellingham we might see sometimes being in that R10 role, L10 role हाँ sometimes as well. So वो rotation, I think Camavinga will still be rotated this season. I think Xabi Alonso will try to mold him into that LCM role where he is defensively solid but also is pinging the forward passes. अभी Arda Guler से वो देख रहे हैं from a more attacking perspective. हाँ But हाँ sometimes let's say आपको game control करनी रहेगी. So हाँ. that's where you need Camavinga at that LCM role. मैं वहीं पे देख रहा हूँ उसको. ओके ओके What यार. do you think? एक सेकंड. टॉकिंग अबाउट राफा लियाओ, पीपल टॉकिंग अबाउट लुइस डियाज एंड बारसा की साइनिंग. मैं वीडियो बना चुका हूँ, शेड्यूल्ड है, कल सुबह देख लेना. आज बारसा के बारे में बात नहीं, आज रियल मैड्रिड एंड पीएसजी. जस्ट अ Right. स्मॉल रिक्वेस्ट. हाँ, हाँ यार, ये राइवल्स के बारे न्यूज़. में बात करनी भी जरूरी है. राइवल्स के बारे में बात करो. कमेंट्स आप ट्रोल करो. टेक राइवल बैंटर्स भाई, यही तो होना चाहिए.
हाँ डॉन यार, कार्लो इन पता है क्या स्पेन नहीं होना प्रॉब्लम चाहिए। क्या है यार, बैंटर बैंटर बचता नहीं है। हाँ, वो इट कहीं इट और ले जाता है। कहीं और चला जाता है। हाँ, मैंने वो वीडियो बनाई, इट वेंट वेल। उसमें वन बारसा कैम बिकॉज आई बारसा फॉलोअर्स राइट, केम इन, राइट, अरे ये रेफरी बन गया है, अब तो रियल मैड्रिड पक्का पहुंचेगी, एंड देन रियल मैड्रिड केम इन ऑलरेडी क्राइंग, तेरी माँ तेरी बहन दिस ऑलरेडी स्टार्टेड। मैंने कहा व्हाई, दिस वाज सच अ ग्रेट एनालिसिस ऑफ द, मतलब मैंने राइट, बनाई है राइट, इसका अच्छा एक कट ही है, कट के मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, गोइंग डूइंग वेल, राइट। एंड द कमेंट सेक्शन इज ऑल ऑफेंस ले रियल। जाते हैं। आई मीन आई हैव कम फ्रॉम एन एरर कि आप अगर मुझे यूनाइटेड पे 10 ट्रोलिंग कर दो ना, आई विल बी लाइक हाँ यही तो है, हम्म बट मैं वापस दूंगा, लेकिन वो बाद में टाइम पे दूंगा मैं। वो वाला सीन है। हम्म थिक स्किन डेवलप करो भाई, कोई बात नहीं, बैंटर होना चाहिए। बैंटर इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ फुटबॉल डिस्कोर्स। ट्रू मजा ट्रू, आता है, वही तो हाँ मजा है, राइट? ट्रू राइट। ट्रू। Coming back to Kamavinga. Kamavinga, I think would be out of favors for me आउट ऑफ this year. फेवर्स। Hmm. हम्म। Too many Okay. options. Last year बहुत option ज्यादा। नहीं थे. Last year option नहीं थे. This season they are spoiled for options because या Arda Guler is playing well. Chouameni को एक अपने role मिल चुका है. Bellingham is there. Then who else is there? Trent will, I think will tuck in the midfield. आई Trent. थिंक यस, यस। सो एग्जैक्टली यू आर करेक्ट। ज़ाबी अलोंसो के बॉल में वी हैव सीन, सो इट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ द प्लेयर। जब फ्रिम्पोंग ज्यादा खेला है फॉर लेवरक्यूजन, वो बंदा ज्यादा विंग और वो ओवरलैप्स में ज्यादा Hmm. रहा है। ट्रेंट, I know has played in that slowly pivot role kind of thing where he tucks into the midfield, but I don't think so Zabi Alonso is gonna tuck in Hmm. Trent. Trent is better wide क्योंकि ज्यादा प्रेसिंग देखने को हमको शायद ना मिल सके इन मोस्ट ला लीगा गेम्स, राइट? हाँ. तो ट्रेंट विथ हिज डिलीवरीज टू द सेंटर ऑफ द बॉक्स, आई थिंक वहां पे द मोर वाइड ट्रेंट इज, द बेटर numbers you will get from Trent. Okay. That's his gameplay where I've seen from Liverpool. मुझे Whenever he has मुझे come tucked in, हाँ उतना numbers आपको नहीं देगा वो। मुझे लगा ही विल डू द किमिक रोल कि ठीक है स्टार्ट्स ऑन द राइट बट इवेंचुअली टक्स इन, He will, बैक थ्री आपको दिखेगी वैसा ही। right? But वो अरे ज्यादा wide होगा। हम्म Whatever you have seen Frimpong did, like he has done for Leverkusen, I think wide पे we will see Trent more this season. अरे 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 वी हैव, अच्छा ही सिंग कामाविंगा का गेम में काफी इंपॉर्टेंट होता पीएसजी का प्रेस को ब्रेक करने के लिए। हाँ वो दैट तो इज अमेजिंग भाई, उसका वो बहुत ही बढ़िया, वो बहुत बढ़िया है। Absolutely, absolutely. I mean, very, very intelligent interceptor बोलता हूँ मैं कैमोविंगो। Sometimes when he comes to the uh, like from the bench itself, काफी impact देता है। Like obviously I was not able to watch Real Madrid week in week out, but whenever I've seen Camavinga play, he has brought that impact. I think in that Dortmund game also when they won, right, when Camavinga came in, थोड़ा हाँ impact तो definitely वो लाया था to break the basically break the press of Dortmund and all. So very well said there by Food Talks. हम्म कामाविंगा हो गया। नाउ अगेन वन मोर प्लेयर जिसका पाचो फॉर्म नहीं ज्यादा है। अच्छा नहीं, पाचो तो नहीं है, हम्म, पाचो इज नॉट देयर, बट फॉर रियल मैड्रिड व्हाट डू यू थिंक अबाउट विनी? विनी के क्रिटिसिज्म आ रहा है ओके, क्या कि क्रिटिसिज्म आ रहा है उस पे अभी? not performing after he said the 10x thing. He's not the same player. Uh, Mbappe is getting, मतलब, getting more More attention. net More and stuff, right? I number think nine वो will probably go to Gonzalo Garcia. I know ये narrative last year से चल रहा है when Mbappe came in, right? That maybe there might be clash of heads, हाँ of egos between the two. I think Vinny, I feel, is a little bit more grounded in terms of that. Vinny definitely gives a lot in the pitch, and Zabi Alonso has already identified this whole situation. And मैंने बात करी, right, when you came on, right, when United also can play like in that 3-4-2-1 situation, right? That 3-4-2-1 can always become a 3-4-1-2. So उस 1-2 में we can see Bellingham in that cam thing and releasing the likes of Vinny and Mbappe centrally. हम लोग ये सेंट्रल अटैकिंग गेम्स देख चुके हैं अगेंस्ट यूवेंटस एज वेल फॉर रियल मैड्रिड, एंड विनी वाज प्लेइंग रियली रियली सेंट्रली एज वेल, सो अलोंग विथ मूविंग वाइड। तो ज़ाबी अलोंसो को पता है कि if Vinny moves towards the center more, Vinny has really good finishing on his हाँ um, on his boots. I think we'll see more numbers rather this season from Vinny. ये मेरा एनालिसिस बोलता है। मतलब bold, but I would love to see. I would love to see Yes, that.
जकामा इज अ गुड कैरियर बट उतना अच्छा नहीं है टू बाईपास द प्रेस. वो ड्रिबल मार के निकल जा सकता है बट अगर सही से जोनल प्रेस करे तो Yes. कामा विल लूज lots of ball which will lead to goal. But personally I always felt Kamavinga was next to impossible press करना. हाँ. मतलब it was very difficult. वो आराम से बॉल ड्रिबल करके ले जाता था, उस पे प्रेस करो वो निकल जाता था. किया थोड़ा है वो लास्ट उसने सीजन अच्छा नहीं खेला. लास्ट सीजन का. हाँ, द हाँ, प्रीवियस ये सीजन भी ही वाज लास्ट. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. हाँ, तो पता है फुटबॉल इट्स अगर आपके पास मोमेंटम और फॉर्म है ना, यू राइट. कैन डू एनीथिंग, मतलब एनीथिंग. और वो इफ इट इज नॉट देयर यू गॉन. मैं फॉर बार्सिलोना आई वुड से Rafinha, Leva are the perfect example. Ferran Torres suddenly राइट. performing. You see Vini from Ballon d'Or to suddenly nowhere to be seen. या. There are other players who are performing. तो फुटबॉल में ना ये ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है. It is just Messi and Ronaldo for the longest of the long. You have seen them for 20 years राइट. maintaining the same level. अगर आप उससे पहले चले जाओ, that time of Pavel Nedved, of राइट. David Trezeguet, of Shevchenko, of यस. Thierry Henry, every year you would see new guy. Kaká, हर साल एक नया हीरो, माइकल राइट. ओवन would come up. तो ये फुटबॉल में ना चलता रहता ये नैरेटिव्स होंगे और अप एंड डाउन्स होंगी. अप एंड डाउन्स क्यों भी होंगे. अभी 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 विनी इज ऑलरेडी विल बी प्लेइंग अंडर अ न्यू मैनेजर एज वेल, है. अंडर जाबी अलोंसो. वो इतने साल अभी एंचेलोटी के गंग हो स्टाइल बोल ही सकता हूँ. फुटबॉल वेयर इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिएक्ट ऑन मोमेंट्स, राइट. अब वो वाला नहीं चलेगा. देयर विल बी लॉट मोर स्ट्रक्चर. अब वो स्ट्रक्चर पे अगर विनी जाबी अलोंसो विनी को सेंट्रली देख रहा है, which means that shift that happened with Ronaldo as well when he went from winger to striker, Hmm. numbers ज्यादा देखने मिले. And Vinny can produce fantastic numbers in terms of goals and assists. True, सेंट्रली true. खेलेगा विनी तो बहुत ज्यादा नंबर्स आएंगे मेरे हिसाब ट्रू से. ट्रू ट्रू. हाँ हाँ. प्रेडिक्शन, डू यू वांट टू मेक द प्रेडिक्शन राइट नाउ या बाद में करना है? करते हैं थोड़ी देर में थोड़ी देर में, प्रेडिक्शन. अभी चलो आई ठीक थिंक पीएसजी के बारे में अगर बात करेंगे एट दिस टाइम तो आई थिंक है. इफ लेट्स टॉक पीएसजी एज वेल. लक्ष्य, आई PSG थिंक ठीक है. आई थिंक वी विल सी डेम्बेले स्टार्टिंग दिस गेम. हाँ अभी तो ओ आई फॉरगॉट अबाउट डेम्बेले. हाँ बिकॉज वो स्टार्ट कर ही नहीं रहा था, उसके बिना काम चल रहा है. डेम्बेले आई कंप्लीटली या. फॉरगॉट अबाउट डेम्बेले. Yes. And Dembele का transformation, I think deservingly Ballon d'Or he might win this season. I think most probably. Dembele not only has redeemed himself in terms of the numbers जो उसके इतनी criticism थी. I mean we all saw the pressing he did against Inter in the final. जो or not only Inter, the whole season. I think this is what Luis Enrique was demanding of Mbappe, which he got from Dembele this season. हाँ. Right? What do you think about this? व्हेन आई सी डेम्बेले, मैं तो एक बास मेला तो बार्सिलोना आका आता है कि, और Right, हमेशा right. एक फीलिंग आती है, व्हाई नॉट एट बार्सिलोना, व्हाई Why नॉट. not at बट आई Barcelona? अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज द टिकी टाका वाला स्टाइल विल नॉट suit a player like Dembele. Dembele is a player who wants to run with the ball, who Yes. likes to make those runs, who needs space. And Right. Barcelona जो फुटबॉल खेलती है, possession based फुटबॉल खेलती थी, where most of the time you would have the ball, you have to अच्छा you go for one play, you go for second play, Right. then his second move would be either cut in or give a cross. Right. अब Right. इतना already आपका D में players हैं, that goes for waste. So his Exactly. style was not working, and same for Griezmann. मेरे को लगता था वो काम नहीं कर रहा था. तो I understand why it did not work. Now I see Dembele beautiful. जो Xavi ने बोला था ना, probably he's better than Mbappe, and he was right about it. He has been immense. मतलब in terms of some of the finishes he has made at Dembele this season, I think centrally उसको काम कर रहा है, because centrally I think since PSG control कर रही है midfield पे वो game, centrally he is getting that freedom to actually roam around and move around, right? And rightly pointed out Lakshay, I think that possession football जो खेल रही थी Barcelona, right? Most of the teams were sitting on low blocks against Barcelona. तो उसको स्पेस नहीं मिल रही थी टू रन, टू प्रोड्यूस हिज एट्रीब्यूट्स. एंड डॉर्टमंड खेलती थी ट्रांजिशन पे. Now PSG playing on the transition attack पे ना Dembele is producing fantastic numbers. Even if PSG का बड़ा गेम प्ले ना काफी balanced है. When they have to control games, they control the games. Sometimes when they have to set back, they are very quick on transition with Bakola, Desiree Doué and Dembele with Kvaratskhelia. Oh, I Right? forgot about Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Oh. So these two will be absolutely killing it. That's why I won't make a prediction right now, but I always will give PSG an upper hand. Because when I saw PSG versus Bayern Munich quarterfinal, right,
it was an erratic game. Let's be absolutely honest. That was a very erratic game. Musiala injury hua, but whatever it is, PSG had moments that Bayern also were having a lot of moments. But PSG, even if they were playing not the best football, they were very compact. Like Bacho and Marquinhos were doing their jobs really, really well. Juan Neves, even if PSG did not have much of the ball, they still managed to stay compact and they won it on moments. Even if playing with 9 men, they won 2-0. That Hmm. speaks about the mentality, right? This Hmm. season, how they played, they have been insane this season. That's why I might give PSG a bit more uh, jump than Real Madrid for this game. Hmm. Because I think the mentality के लिए. हाँ, मेरे को मोमेंटम की वजह से ज्यादा लग रहा है। आई टेल यू Right, व्हाई। एक तो फ्रंट थ्री या तो कंप्लीटली फॉरवर्ड। हाँ यार, पाचो नहीं है, पाचो लुकोस हर्नांडेज नहीं है, प्रोबेबली फाबी भी नहीं है। फाबियन रूइज इज माय वन ऑफ माय फेवरेट मिडफील्डर्स, right, especially in the Euros that he performed. PSG का that up front is amazing, midfield is amazing. The only weak part I think is the defense because right. पाचो नहीं है, मार्किनियोस अच्छी गेम जा रही है तो बहुत अच्छी, ब्रेन फार्ट करता है तो बिल्कुल खराब। विंग्स पे Absolutely, इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, you can absolutely, exploit on their wings if you want to. Nuno Mendes की साइड से नहीं, बट हकीमी की साइड से yes you could. तो I say PSG would be dominating because of the momentum they have, the mentality, क्योंकि वो follow होते आ रहे, it is only going up right now. You don't see absolutely. any crack, you don't see any crack, I think they had that everything good. one loss against Botafogo, I think, in that हाँ, group Botafogo, stages. yeah. That's it. But rest has been clean sheets, right? Two goals and 4 goals. They have been scoring goals. They have multiple scorers. Their highest scorer right now are Juan Neves and Hakimi with 2 goals. But there have been other players who Juan Neves has also scored Hmm. two as well. They have some youngsters scoring as well. Lee Kang भी score किया था goal. So they have multiple scorers in their ranks. Quarats के लिए कि एक ही goal है, I think, this Club World Cup as well. अभी तक तो कोई टीम इतना सीरियसली नहीं, बट नाउ दे विल टेक इट बिकॉज इंटर मायामी गेम मैचअप अच्छा है वाज ना. इंटर मायामी गेम वाज या पीपल आर मिसिंग फुटबॉल है ना लक्ष्य. अभी इस टाइम हम्म पे हो गया भाई, सीजन शुरू कर दो वाला सीन आ गया है लोगों का. हम्म एंड नाउ आई थिंक क्लब वर्ल्ड कप का मेन पिकअप किया hype was around that PSG Bayern Munich. What a insane game that was, हम्म। right? So I think वहीं से I think it has picked up. And वो एंड में, हाँ, एंड में आते आते बायर्न ऑलमोस्ट पुल्ड इट ऑफ, कोर्टुआ ने सेव कर लिया। एक्सो right, यार प्रॉब्ली रूइस है, लास्ट दैट आई चेक नहीं थे, बट प्रॉब्ली injury ही के वर। news थे, right, हाँ, बट ही इज बैक, गुड गुड यार। right, right, right. ट्रेंट नहीं खेल सकता, आई थिंक ट्रेंट इज इंजर्ड पीयूष, आई थिंक ट्रेंट नहीं है। रिस्क भी नहीं करेगा उसको ज़ाबी अलोंसो गोइंग फॉर अ लॉन्ग सीजन, राइट? उनके पास हैं, वास्केज हाँ। खेल सकता है या वैल्वर्डे उस रोल पे खेल सकता है. वी हैव सीन दैट. बाय द वे 60 लोग देख रहे हो, स्ट्रीम लाइक कर दो और ऐश के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐश टेल मी, सब्सक्राइबर्स आए नहीं आए? मैं देखता हूँ अभी सब्सक्राइबर्स आए हैं कितना, 4 आए हैं आज. हाँ, करो आए। और सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. आई मीन लक्ष्य रियली रियली हम्म अप्रिशिएट, आई मीन यू हम्म सेइंग दिस टू योर सब्सक्राइबर्स. आई मीन मेरे जाके कंटेंट देखो. इफ यू लाइक माय कंटेंट ना तभी सब्सक्राइब करना. नो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस विल लव इट. हम्म। और मेरा और लक्ष्य का स्ट्रीम जरूर चेक करना. इट इज क्रॉस्ड 1K व्यूज ऑलरेडी. काफी हाई व्यूइंग आ रही है, लंबी वॉच कर रहे हैं लोग. तो हाईएस्ट है बढ़िया क्या? सेशन था. इज इट योर हाईएस्ट? स्ट्रीम के हिसाब से आई थिंक अंशुमन के साथ एक था 1K, बट हाँ। मेरे वीडियोस आर डूइंग प्रीटी वेल ना. माय वीडियोस हैव ऑलरेडी like it's growing 5K 6K पे जा रहे हैं एक वीडियो at this हम्म। point. The analysis that I've made, so do go and check out Reinders Chucky, words, ये सबका analysis वीडियो किया मैंने. lot more content coming up as well. Madrid Barcelona पे भी आएगा. यार आज वॉच लॉन्ग नहीं कर रहा मैं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग अ लाइव विद ऐश राइट नाउ, और गेम के बारे में भी बात करूंगा। वॉच लॉन्ग नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ माय वर्क, सुबह सुबह उठना होता है तो नॉट पॉसिबल। मैं भी ब्रेक लिया अभी काम से, फिर जाना है वापस. It's daytime in Canada, guys. It's how हाँ। much 1 p.m. in Canada. So सीजन खत्म नहीं हुआ अभी तक, शुरू कैसे करें? That's an interesting point because सीजन शुरू होते ही क्लब वर्ल्ड कप आपके शुरू हो गए, राइट? एंड देन लोगों को ब्रेक ही नहीं मिला. आई मीन पीपल हु हैव वॉच्ड फुटबॉल एवरी वीक एटलीस्ट द क्लब वर्ल्ड कप, उनको ब्रेक ही नहीं मिला. आई टुक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ ब्रेक फ्रॉम फुटबॉल आफ्टर यूनाइटेड, all the toxicity that happened. I took some decent break from watching games. I want to take a break. I generally like taking a break, but as a content creator, तो zero break भाई. Plus being I a know. Barcelona fan, अच्छा निको विलियम्स ब्रेक नहीं आ रहा. Right. And in terms of Premier League transfer, like me primarily being more focused on the Premier League, but this time I have said to you before in the live stream, right? Like Barcelona, PSG, the likes of Inter absolutely entertained me and made me even more interested to really, really focus on these teams as well this season. But
from Premier League standpoint as well, lot of transfers are going on. Mohammad Kudus abhi he's gonna sign for Tottenham. What is Would happening with अभी यूनाइटेड वो आने वाला था, मतलब I saw Embomo, there's a Embomo, एम्बोमो, हाँ क्या हुआ? He's not coming. Embomo का क्या हुआ है at this point is 62.5 million की bid reject हुई है again, and this deal is just getting delayed every day. Now this is really getting frustrating because हम ना रैशफोर्ड को सेल कर पा रहे हैं, ना एंटनी को सेल कर पा रहे हैं, ना सांचो को सेल कर पा रहे हैं, ना गार्नाचो को सेल कर पा रहे हैं. Now we don't have the funds to even furnish even more players at this point. We need to close the Embuemo deal ASAP. Deal structure पे ही negotiations चल रही है इस टीम. I mean the price point is 65-70, but yeah, Such a Barcelona problem. We could not get right, Nico because we could not, sell players. तो पहले players बेचे. अब ना इनाकी पेनिया का भी deal almost done हो चुका है. right. इनाकी पेनिया is almost मतलब looking for clubs. तो 3-4 पहले बेचेंगे और फिर ला पाएंगे हम लेफ्ट विंग पे बार्सिलोना. I Absolutely, think Man U is also in that same dilemma that कि players absolutely. बेचने पड़ेंगे. Yes. अभी बेचनी जरूरी है, not in terms of because we have to sell them. These players are not even performing to the levels Amorim expects at United. Like Rashford टॉक्सिक हो चुका है, सैंचो वाला एपिसोड टॉक्सिक हो चुका है, गर्नाचो वाला आफ्टर द फाइनल एब्सोल्युटली Amorim doesn't want. I think what's happening right now is a culture reshift. हो रहा है at this point. What Amorim wants is more discipline, more control over the team. Like players should never be bigger than the club. वो हमेशा एलेक्स फर्गसन के टाइम पे रहा है. When we have seen with the likes of Beckham, क्या जो Beckham. एपिसोड हुआ. I saw the whole documentary. I remember. वो Fantastic documentary by the way. हाँ, Yeah. Ferguson was more annoyed by Victoria than Beckham. Yes. Even like I think Arsenal की भी talks चल रही है with Noni Madueke. So a lot of things are happening in the Premier League transfer situation. Interesting to see कि will Barcelona go for Luis Diaz, but yeah. नहीं होगा. I've made a video. We have made I don't. already. Yes. हम लोग हाँ, बात नहीं किए थे होगा. stream पे. It does not नहीं make होगा. sense right now. I think But Rashford deal might make more sense. Bayern out of nowhere came in and they're like, we want Yeah, Luis Diaz. Bayern is desperately looking for a left winger, considering Kingsley Coman is still unsure whether he will stay or not. Also, Musiala's injury. मैं actually I was in another stream, I think Almighty Blues पे मैंने बोला कि I think this is a great opportunity for Nkunku to come back to the Bundesliga and actually regain his form back and life back, considering Musiala's injury. But we'll see, man, how it goes. अच्छा, 100 कह रहे हैं मैं PSG फैन हूँ, बट हमारे इंडियन क्रिएटर सपोर्ट करने करने को तो बनता है. Thank you so much. यार PSG सपोर्टर दैट्स अ बिग थिंग, इंडिया में मिलता नहीं है वैसे ज्यादा. बहुत कम है. हाँ. when Montreal में, लेकिन where I stay, right, insane PSG supporters, like massive because of होंगे the ना, French because expats. French हाँ. French expats, right? A lot of French expats. फर्स्ट का हेरवी गो हो गया है इन द सेम प्राइस फॉर नोनी मैडुएके. लक्ष्य रियल मैड्रिड साइन दैट छपरी चाय की टपरी वाले अंकल. ये कौन है? अरे वही चाय के टपरी वाला जो आपका है ना कैंप नो में, ही सेट्स अप चाय का टपरी, सो यू साइंड हिम बेसिकली. फॉर अ सेकंड आई गॉट सीरियस केस, क्या हो रहा है? अच्छा, फुटी एफसी कह रहे हैं बारसा आई थिंक नथिंग गोइंग टू साइन दिस समर एनीमोर. यार बारसा पहले सेल्स करेगी और फिर शायद से खरीद पाएगी. पहले सेल्स कर रहे हैं अब हम. अभी बारसा का ट्रांसफर विंडो का डेडलाइन क्या है? एंड ऑफ अगस्त ना, आई थिंक सो. प्रीमियर लीग का उससे पहले खत्म होता है. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अभी बार्सिलोना will they secure Diaz or Rashford, or will they look for more underrated options? I think Fofana वगैरह देख सकते हैं. I'll tell you 3 names. ठीक है. अब वीडियो में थोड़ी इनकरेक्ट हो गया because I said लियोन is relegated, तो 60 मिलियन का प्राइस है, बट वो 30 मिलियन में मिल जाएगा. बट आज न्यूज आ गया कि लियोन ने वही पैसा बना लिया है. बट आई थिंक दे स्टिल माइट सेल क्योंकि पैसा चाहिए उनको. राइट, डेफिनेटली. दे आल्सो चैलेंजेड बिकॉज़ चैंपियंस लीग खेलना है. चैंपियंस लीग से पैसा आता है. राइट, एब्सोल्युटली. चैंपियंस लीग बहुत पैसा आता है. आप just being there 100 million, that's it, straight away, right, in the group stages, just by being there. Correct. So one is your Fofana, cheaper option. Then you have Antonio Nusa from Leipzig. And then you have Ben Seguir from Monaco. बेन सगीर के बहुत मेरे स्ट्रीम पे भी काफी कमेंट्स आए थे अराउंड की बेन सगीर, हाउ इज ही प्लेयर, लाइक हाउ अ प्लेयर इज. आई थिंक दीज आर स्मार्ट साइनिंग्स. आई मीन अंडररेटेड साइनिंग्स जो बोलते हैं ना, नॉट गोइंग फॉर द मार्की साइनिंग्स.
Pramodini बोला भी, he's saying that Rashford on loan and a white fullback is our two realistic transfers as of now. For me, I think मैंने कहा है, right? I think we talked about, I think Rashford now is willing to take the wage cut, right? If he takes that wage cut and willing to play football, right? 150k पे बार्सिलोना ला सकती है सैलरी पे, लोन with an obligation to buy. I think from a United perspective looks like a more sensible deal. But will Barcelona ever go for a loan to buy with Rashford? अगर चला नहीं तो obligation वाला, I don't think so that's going to नहीं नहीं happen, नहीं right? नहीं नहीं करेंगे, डेको नहीं करेगा, डेको इज अ Right, चिंदी गाय, ही वुड नेवर मेक सच right, मूव। right, 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 इवन द जाओ फीलिक्स एंड जाओ कंसेलो वाली में हार्डली दे गॉट एनी मनी, 60-70 right. यूरोस पर वीक, व्हिच इज वेरी लेस। Absolutely. जान वर्जिल की गेम्स मैंने देखी है यार, आई सॉ उसके हाइलाइट्स स्पेनिश नेशनल टीम के लिए, लुक्ड वेरी गुड, लाइक वो और किम जुनेथ दोनों काफी अच्छे Right, लगे थे। right. तो देखो बारसा का ना, आपको मैं चीज बताता हूँ, उनकी प्लेइंग 11 सेट है, हाँ, उनको चाहिए जब कोई अनअवेलेबल हो तो उनकी रिप्लेसमेंट्स। वन इज रूनी, रूनी का हेयर वी गो हो चुका है, right. अब वो Finally, बाद में वो हटा दे फाबित्सो रोमानो, मुझे नहीं पता, right. उसने डाला था। Rooney register नहीं हुआ अभी तक, right? अभी वो उसका ऑफिशियली वो भी नहीं हुआ। Officially नहीं हुआ है. हम्म But here we go आया हुआ है बस at this हम्म point. Right, सो वी हैव right, टू right. वेट फॉर द नेक्स्ट साइनिंग, तो सस्ता लाके उसको 1-2 साल डेवलप करके देन यू वुड प्ले, इज द स्ट्रैटेजी आई फील। आई थिंक Right. रैशफोर्ड भी नहीं आएगा। I think yeah, वही इसीलिए I have said this to a lot of United fans as well कि we might get stuck with these four players like Rashford, Sancho, Anthony because wage cut कोई लेगा नहीं, bid करेंगे कि नहीं. Real Betis तो already have signed to like sold few players but they are signing another one as well, already another winger they have signed. क्या वो Anthony को लेंगे? I have already said to a lot of United fans कि अगर Embuemo ही is the only deal that's going to happen this summer. और उसके बाद हम लोग फ्री में ना डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन ले लेंगे एंड विल जस्ट बी यही एंड आई एम Nobody is ड्रेडिंग दैट liking डे. him. No, huh? Every Manchester आई United एम fan is ड्रेडिंग इट like, मैन. आई एम ड्रेडिंग इट एवरी डे. आई एम ड्रेडिंग इट बिकॉज ही इज अ प्लेयर अगेन लाइक माउंट एंड शॉ जिसकी इंजरी रिकॉर्ड इतनी खराब है. hmm, ही कैनॉट प्रूव हिमसेल्फ. लाइक प्लेयर अच्छा हो सकता है बट हम जो प्लेयर बंदा 30 गेम्स के ऊपर खेलेगा ही नहीं उसको आप क्वालिटी के नाम पे लेके क्या करोगे हर सीजन, राइट? यार ऋतिक, मैं पहले इसको कंसिडर नहीं कर रहा था, अज्यूमिंग कि हमारे पास पैसे थे, बट नाउ मैं बट अज्यूमिंग हमारे पास पैसे नहीं है, राइट. तो बेन से ही even the VIP boxes that you signed वो books पे नहीं है at this point in terms of revenue, right? पहले मेरे तो को लग रहा था कि ऐसा हमारे पास पैसे हैं तो right. वी कुड गेट हिम, बट अभी मैं अज्यूम कर रहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो बेन से ही मेक सेंस। yes राशि बट को एनीवे ले लो लोन पे. I think from a United आई तो perspective वुड लाइक इट, मैं लोन आई deal वुड it लाइक makes इट, sense. आई वुड Yeah, लाइक इट। and Hansi Flick can transform uh, Rashford a lot. उसके पास वो गेम है जो डायनेमिक फुटबॉल इस साल बार्सिलोना खेलेगी और लास्ट ईयर खेली है. आई थिंक आई रियली सी रैशफोर्ड really killing it at that left wing position मेरे हिसाब से. But always Barcelona fans keep this in mind कि तुमको डिफेंसिव जो ट्रैक बैक करने का जो चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा रैशफोर्ड से. कीप दैट इन माइंड व्हेन यू डिजायर रैशफोर्ड. तो रैशफोर्ड से आप सिर्फ अटैकिंग नंबर्स ही एक्सपेक्ट कर पाओगे. दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई Amorim did not want him as well. His off the ball work rate is not that great over the season. Hot and cold रहा है. But a stat, whenever he has delivered 20 goals plus assist in the season, United have finished in the podium finishes. So keep ओह, that in mind. Yes. वो कौन सा सीजन था व्हेन ही स्कोर्ड 30 गोल्स, जो पीएसजी को नॉकआउट किया था, दैट सीजन राइट? Right. And वो था 30 goals वाले season पे we finished third. Eric Ten Hag वाला season. His best one ever. We finished third that season. And एरिक टेन हाग था या वो था सोलिशार था? सोल्शार के टाइम पे रैशफोर्ड डिड नॉट हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ नंबर्स जब इनिशियली आया. फिर बाद में सेकंड हाफ सीजन में उसके नंबर्स थे बट 3 सीजन में उसके नंबर काफी अच्छे थे. वो सीजन अपन सेकंड और थर्ड आए वो सीजन्स. ओके ओके, बट जिस सीजन उसके नंबर्स 10 गोल्स एंड असिस्ट रहे हैं या उससे हाँ नीचे रहा है, वी हैव फिनिश 6th 8th एंड नाउ 15th. हम्म, सो ये इम्पैक्ट रहा है हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्टफुल प्लेयर रैशफोर्ड कैन बी. ये कह रहे ब्रो, कैन यू रैंक 6 प्रीमियर लीग टीम्स नेक्स्ट सीजन ऑन द टेबल? देखो यार, मैं आज भी ऑनेस्ट, प्रीमियर लीग में ना बिल्कुल मैंने फोकस अपना कम किया हुआ है.
I think Ash would be the right person. Right. प्रीमियर लीग रैंक नेक्स्ट सीजन ऑन अ टेबल विल फिनिश. मैं अभी भी इस चीज पे कह रहा हूँ कि लिवरपूल विल विन द टाइटल अगेन. राइट. लिवरपूल विल विन द टाइटल अगेन. आर्सेनल इफ दे आर एबल टू लैंड रोड्रिगो, Hmm. तभी they will be able to compete neck and neck with Liverpool. Hmm. City, so I'll take, so I'm assuming कि let's say they're signing Gyökeres, they have already signed Zubimendi, which is a fantastic signing. um, Spoiler alert, मैं उस पे वीडियो बना रहा हूँ मैं. But I think if they get to sign Rodrigo to replace Martinelli on bench, I think that's where they would be getting that X factor. Arsenal would come second, third would be City, because yes, they have a fantastic squad. They still lack that defensive stability this season. तो City third ही आएगी. Fourth में I'm seeing Chelsea again. Fourth में Chelsea आएगी. या fifth में a very underrated opinion, but Spurs will finish fifth. Europa League. Yeah, finished 17 last season, but they have a fantastic squad now with a new manager. They've signed Kudos. Finally, we will get to see Kulusevski on the right wing. They will play really, really well. Brennan Johnson. Attacking wise, they are very, very good. If their defenders stay fit, they're gonna finish fifth like the before that. And sixth पे underrated मैं एक shout दूंगा तो Newcastle will finish sixth. And United top 8 पे आएगी. 15 से अगर 8th पे हम आते हैं and we get that swagger back, at least in terms of football, the one we saw Klopp did with Liverpool, I'll be pretty satisfied. At least some progress हमको देखना जरूरी है. So this will be my realistic top 6 prediction. Interesting. Let me think. Liverpool, City, Liverpool, Arsenal. Arsenal Okay, second. okay. I'm doing Liverpool, City, Arsenal for me. ठीक है. हाँ. Liverpool, City, Arsenal, Chelsea, United, Okay. Newcastle. यूनाइटेड आप टॉप 5 देख रहे हो इस बार, हाँ, मतलब हाँ. कंसिडरिंग अ फ्रेश न्यू सीजन. हम ऑब्वियसली यूरोप नहीं खेलने वाले हैं, सो Yeah. दैट्स अ मेजर फैक्टर. आई एम कीपिंग माय एक्सपेक्टेशंस लो इन टर्म्स ऑफ टॉप 8, बिकॉज लास्ट सीजन हम जब टॉप 8 का जो चैंपियंस लीग रेस देख रहे हैं, इट वेंट टू द फाइनल डे वेयर 4 और 5 टीम्स वर इन द रेस फॉर गेटिंग इनटू यूरोपियन प्लेसेस. सो आई थिंक मेरे लिए 7th या 8th अगर आएगा ना, तो आई थिंक आई बी प्रीटी सेटिस्फाइड. आई जस्ट वांट टू सी सम गुड फुटबॉल एंड that swagger back at Old Trafford. We have to at least make Old Trafford the fortress for United हाँ, next season. true. Right? स्ट्रीम सॉफ्टवेयर बता दो यार, ऊपर लिखा हुआ है साइड में रीस्ट्रीम. लेक्स भाई, आप वो ना स्पेनिश सिखाने वाले. हाँ भाई, मैं ही हूँ वो. यूनाइटेड विनिंग टाइटल, लेट्स गो. भाई साहब, ये हो गया ना इस सीजन, मैं भाई स्ट्रीम में वो कुछ स्पेशल होगा स्ट्रीम में उस दिन. दो, I'll say 2 more seasons and then United would be in the race. 3 सीजन 3. मैं वही बोल रहा हूँ, इस मैनेजर के साथ स्टिक करते हैं ना, 3 सीजन बाद वी विल सी अस एटलीस्ट कंपीटिंग देयर. लाइक एक लंबा टाइटल रेस जा सकता है. इन द 5th ईयर आई वुड एक्सपेक्ट United to win the title if we still stay with the new manager. Maybe Arsenal fans might say the Arteta way. Arteta अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है 5-6 साल से. They're still gunning for him a lot. But 5 years is a decent amount of years for you To to give to start. somebody. Exactly. But हम लोग ना, पता है हमारा banter era में भी we have won trophies United. हाँ. So we have that killer instinct, right? जो Arsenal नहीं कर पाई है. So if we get our squads right, we can come back to winning, like not winning, but at least competing for the Premier League title soon. You know, Yeah. one thing that I miss also, Right? Mourinho in Premier League. That aura, but I think it's done. Like I think his His era style is of kind football. of done. His style of football is His over. style of football is done. His tactics and everything. I think it's kind of, The he's a very stubborn manager, right? the mystery, the game, Enigma. mind games, it's all done. वो उसने It's all done. अंदर से ना क्या हुआ, यार अच्छा पूछा था ना, मैं स्पेन से हूँ यार, मैं स्पेन से नहीं, मैं दिल्ली से हूँ. बायर्न ट्रांसफर न्यूज़ बता दे. नहीं, लुइस डियाज को आ रहा है, उससे ज़्यादा मेरे को पता नहीं है. क्या खा रहे हो भाई? खाना खा रहे हो, डिनर यार. दैट्स हाउ यू वर्क मैं भी एंड लंच करूंगा स्ट्रीम. फटाफट, फिर देन आई हैव टू गो ऑन वर्क एज वेल. मैं और 10 मिनट हूँ, ठीक देन है, आई ठीक है. हैव हाँ, टू लीव नाउ. यहाँ गो. तो जोजे मरीनियो, इट वाज, उसको अंदर से सैटिस्फैक्शन मिल गई थी. नाउ ही इज जस्ट डूइंग फॉर द फन ऑफ इट, नॉट Right. बिकॉज ही वांट्स टू बी द बेस्ट. Yeah, but he's actually absolutely killing it वहाँ पे in terms of the Turkish league as well, because भाई controversy हो गई थी. I think you remember the पोस्ट डाल incident दिया था that उसने happened. इंस्टाग्राम पे ही पुट अ पोस्ट. Exactly, and even the team analysis, he took the laptop and showed the referee कि ये देखो offside नहीं है करके. So he's actually speaking a lot about the corruption that also happens in Turkish football as well. So उसको भी वो
खोलने की कोशिश कर रहा है. I think next stop he will just go to Saudi, man. That's what I'm thinking. Become a brand ambassador in terms of managers for. You know what I want? Yeah. Ronaldo to retire and Jose Mourinho to be the new manager of Portugal national team. वो होगा. I think that's gonna happen. I think But that the will happen last someday. dance, the last dance, the last thing, Yeah. Ronaldo to go away, Jose to Yeah. come in. Yeah. I Absolutely. I am waiting for that. मैं Yeah. बहुत मिस करता हूँ जोसे मरीनियो Yeah. को. For me, when I was growing up, I was more of a Roger Federer and Right. Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson. But Right. when I was mature, I started supporting Rafa and Jose Mourinho Right. Right. because Right. the the word that you use, enigma, the Enigma. mental strength, the aura that these guys have is out of the world, and I Out of the love world. Jose's aura. Exactly. When it was on the pitch, it's something else. Hmm. एक डी का कमेंट आया, कितने डेलुलू लोग हैं, ये टॉप 10 भी नहीं आएंगे इस मेन्यू इस साल. ओके. See, my experience of watching football over like 20 years says me something that, you know what, Spurs, like when I said, like, also a lot of people don't agree with that Spurs comment as well. When I said Spurs top 5 top 6 में आ सकती है, आपको देखना पड़ेगा कि उसके पिछले सीजन भी Spurs आई थी top 5 में and qualified for the Champions League, like, right? So we have to understand the context कि Spurs has a good squad that last year, because of Ange Postecoglou's really erratic tactics and game management, were not able to win the matches. उन लोग winning points से points हारे हैं बहुत काफी, right, that season. So स्क्वाड बहुत अच्छी है. थॉमस फ्रैंक इज अ वेरी गुड मैनेजर. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ टॉप 6 तो आ ही सकती है, बिकॉज स्क्वाड क्वालिटी जरूर है उनके पास, इन टर्म्स ऑफ मिडफील्ड, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ द अटैक एज वेल. सॉन मे बी इज नॉट द सेम प्लेयर एनी मोर, बट वही होने वाला है. बट यूनाइटेड में टॉप 8 तक एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ आना चाहिए एंड ऑल. ओके. लक्ष्य भाई, यू आर वेरी हैंडसम. स्किन्स के लिए क्या यूज करते हो? ओ भाई साहब, आता है ये भी कमेंट्स डर्मेटोलॉजी. आएंगे. मैं हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ सही में. फॉर नहीं माय नहीं, स्किन, जाना सही में जरूरी भी है. सही में. नहीं, कभी I- जाना जरूरी भी है. व्हाई या नॉट. मेरा ना जल गया था यहाँ पे, सो आई हैड टू गो टू अ डर्मा एंड देन ही गिव मी काफी महंगी दवाइयाँ. सच आई बता नो. रहा मेरे भी हूँ. थोड़ा और थोड़ा कुछ कुछ निकल रहा है, सो आई हैव टू. गो टू अ 30s के डर्मा. बाद होगा ही. Exactly, after 30s. And vitamin C. एग्जैक्टली, विटामिन सी. Although I don't want Arsenal to win, but my gut says next year will be the year. नॉट गonna banter, but it's like Netflix. Netflix. It's always we look forward to the next season, but I think more than, I think वही बात है ना, एम्बिशन पे आ जाती है प्लेयर की. आई लाइक आर्सेनल, ठीक है, एज अ फुटबॉल क्लब आई लाइक देम. मतलब Hmm. what they stand for in terms of football and the football they play and what everything, like very legendary club. I've been watching them so many years. वो एक्स फैक्टर साइनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? अब लाइक कर एक रहे हैं ना. मार्क. अब कर रहे हैं ना. जुबी. Gyökeres or Zubi and Gyökeres. Gyökeres are good, but when I'm saying marquee like a Rodrigo, right? Rodrigo will be their marquee signing. People don't realize how huge Rodrigo is. Like, at least for Hmm. Premier League fans हाँ who हाँ. watch Real Madrid, Hmm. and the stuff Rodrigo has done for Real Madrid over the years, Rodrigo is marquee, clutch, that X factor that Arsenal lack in terms of winning the Premier League. घर पे they lose some crucial points. They can't even take that leap of faith to go and beat City and Liverpool away. उसी हाँ. वजह से they kind of lose that whole Premier League का title race by minute margins. I remember City जब 3-1 आ रहे थे, they just had to beat them. But City top form में थी. It's easy to say that. Right. And even the season they lost, right? 2-0 they lost to Aston Villa at home. They were very much on top of that season, right? And then Hmm. City finally with Foden with that insane form won the league, right? हाँ मतलब पूरा season they were on the top and then suddenly lost to Exactly. City and Suddenly lost a the. blip. We saw what happened with Inter, right? So squad उनके पास, Arteta का वही problem है. He banks on his playing 11 too much that he forgot to maintain his bench. His bench did not have that best of quality. Right now, I think they're working on that bench with that whole Madueke signing. I think that's going to be really good. Unpopular opinion against among Arsenal fans, but Madueke will work very well. Corbo Jitbo. I'm a KKR अच्छा fan as well. यार, बारसा का मैंने वीडियो बनाई है कल इस टॉपिक पे, कल आ जाएगी. बट नाउ कमिंग बैक टू PSG वाला. the game Ah, in hand that we have, PSG versus Real Madrid prediction time. Let's right. go for it.
Ash, what do you think? Prediction, I think Give me a descriptive one. Don't give me one. अच्छा ये. Give me नहीं नहीं full नहीं नहीं description. डिस्क्रिप्टिव वन नहीं बोल रहा हूँ. I हाँ. think what's gonna happen with this game is we'll see that PSG dominance early on in the game. PSG शुरुआत बहुत अच्छी करेगी आपकी गेम पे. It will take you out of surprise. उसी पे I think Real Madrid have to capitalize with their vertical passing that we have seen this हाँ. season already in the Club World Cup. Quickly counter पे खेल सकती है. PSG has that extra mentality, I would say, with that whole momentum that's coming behind them, right? Hmm. Again with the 9-man win against Bayern Munich, brilliant solidity there. I would go for a 2-1 close win for PSG. I think हाँ. Dembele will be really, really crucial coming back, but Mbappe does have something to prove in that game. But I'm going with a PSG win 2-1. हाँ. Battle of the wing backs in this game. That's where it's gonna fall down to. कोर्बो रोबो जीतो रे. अभी मैं यार मैच के बारे में बात कर रहे हैं ना, पीएसजी वो तो बारसा के बारे में कल कल आज बारसा नहीं, आज दूसरी टीम पे फोकस. माय प्रेडिक्शन ओके, पहले मेरी भी 2-1 थी, बट नाउ इफ आई थिंक अबाउट इट ना, हाँ, same what you said, PSG will dominate, PSG will do 2-1, then एक in phase the आता dying है. moments, 2-2, match will go to penalties. And just because in the bigger games, in those bigger competitions, in those latter halves of the tournament, Right, Real Madrid will take it on penalties right, and right. win it. Yeah. Even Courtois can have a masterclass of a game that we have seen time and Hmm. time again. Hmm. Penalties पे लेकिन Donnarumma has had a good record. Yes, yes, So penalties yes. तक जाएगी तो अगर game extra time पे जाती है तो Real Madrid has been the better extra time teams over the Hmm. years. Penalty तक जाएगी तो I would give PSG, man, because of Donnarumma's go penalty saving. He has better penalty saving abilities than Courtois. No disrespect to Thibaut Courtois. Again, don't take my words, twist my words, Real Madrid fans. But when it comes to penalty shootouts, Donnarumma is something else. So, guys, अपनी भी prediction दे दो. I think mostly we have covered everything. Any last Yes. words, Ash, before uh, we I finish this mean, stream? last words, absolutely fantastic again having discussion with you. Last stream with जब आप आए थे, it was Hmm. amazing. Obviously, thanks to the chat for also joining. जो मेरे यहाँ से भी आए हैं तो you have to subscribe लक्ष्य channel. It's a no-brainer also. और Instagram भी देख लो आप उसका. Fantastic content there. मेरा भी नहीं किया तो मेरा भी subscribe कर दो. And हाँ also यार, look forward to a lot of content coming in as well from my end. 51 लोग अभी देख रहे हैं. स्ट्रीम लाइक कर दो और ऐश के चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मैं ला लीगा के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ. ऐश टॉक्स अबाउट प्रीमियर लीग एंड आई एम प्रीटी श्योर प्रीमियर लीग तो सब देखते ही हैं. Yes, सो yes, and गो वॉच definitely इट. we'll and this season my focus will be on Barca and Real Madrid and Atletico a lot. This season I'm also gonna do a lot of La Liga stuff. That's why we'll do a lot of content with Lakshay this season as well. Look forward to that. Um, I mean, fantastic game होने वाला है. मजा तो आएगा. At least season एक beginner बोल सकता हूँ. Finally, people have their eyes on the Club World Cup because of the competition that, मतलब the games that are going to be there. So, absolutely. करेक्ट. चलो गाइस, थैंक यू सो मच. बाय बाय. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. सी यू लेटर.